bits number of information that is available to you is called as a 0 1, and there are triple zero is here, and this one. This information you want to transmit, and suppose this is your bit number D0, and this is your D1, D2, D3, D4, and this is your D5. Okay, so this is your LSB of the information, and this is your MSB of the information. So in the case of the serial communication, you are sending the bits serially, because you have to send this LSB first, then the second LSB later on, and then you are proceeding towards the MSB, and the mode, the data transfer direction will be like that one. Okay, so this is called the serial communication. So in the case of the serial communication, what will happen is that you are nothing, you are transmitting the some voltage level from one place to the another place, and that voltage level, because you know that if I'm considering this is zero point 0.2 volt, if I'm considering 0 is 0.2 volt and this is 5 volt, so this volt, whenever the volt will come into the picture, you have the two lines, because we are talking about the at the one line you are sending your voltage with reference to the ground. So the may possible that this line will be grounded, and so at this point you can send the some data, for example, like this. Okay, so this is the way, because here you say only the two lines are available in the case of the serial communication. So this is the mode of your serial communication. Okay, while in the case of the parallel communication, for example, if I'm having the total 5 data lines here, so 5 अगर मेरे को डाटा अगर मुझे सेंड करना है तो मैं कैसे सेंड करूंगा? तो फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड माय D0, D1, D2, D3, D4 and D5. So this will start from your D0 and this will be end at D5. So this on each and every bit, for example, here the logic level is 0, according sorry, here the logic level is 1, remaining lines are having 0, and again it is 1, and this is 0. So for sending the n number of the bits, you require n lines. Okay, so which one is faster? The first thing is that which one is faster? Obviously, because I am sending, because if I started from the point x1, if I'm started from the point x1 and I have to reach at the x2, okay, so मैंने x1 पे सभी बिट्स को एक साथ ही लॉन्च किया, और हो सकता है वो x2 पे फॉर एग्जांपल इन ए 2 microsecond they will receive at the x2. So for here to here it will taking a time of 2 microsecond. But if you are sending the complete information serially, may possible that each bit will take the some time. So for example, if it is taking a time, because it is serial communication and it is taking a time of zero point 0.5 microsecond, each bit will taking. So I can say the total it will take the time of 2.5 microsecond. So the complete information is received at the destination in the 2.5 microsecond, which is we can say it is very, very slow as compared to the parallel communication. It may possible that I have here mentioned 2 microsecond in the case of parallel communication. हो सकता है इससे भी थोड़ा कम टाइम लगता हो. So the important point ये है कि serial communication जब भी आप कर रहे हैं, तो serial communication करते टाइम हमको number of wires की जो requirement है, वो हमें हो सकता है maximum हमें 2 lines की जरूरत पड़े. बट यहाँ पर हम जब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर 8 बिट डाटा अगर मेरे को 8 वन टाइम अगर मुझे ट्रांसमिट करना है, सो मेरे पास 8 लाइंस होना चाहिए. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस हियर. n बिट्स के लिए मेरे को n लाइंस, बट विच वन इज फास्टर? ऑब्वियसली द पैरेलल कम्युनिकेशन इज फास्टर एज कंपेयर टू द सीरियल कम्युनिकेशन. सो नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो आई विल write down here serial and parallel communication difference. There are a lot of differences are actually available. So may possible that the 2 lines, it is very slow, it is very, very faster. Here the n lines, but the problem is that the maintenance of this one is very, very difficult, because if the any of the line is not working, then then the information will not be retrieved at the destination perfectly. So that's why maintenance very, very difficult, and it is, we can say the maintenance very, very easy. And apart from that, it
it is very complex type of thing is that, and it is very costly. So normally in the whenever talking about any type of the embedded system design or embedded point of view, we normally prefer the serial communication. So you can just please write down all these things here. What is the thing? So I want to say that whenever we are designing any type of the embedded system, and when we are talking about the communication, okay. So in the case of this, serial one is preferred so much as compared to the parallel one. So now one question will come into the mind that how the data will we will get the serial. Okay. So for example, if suppose मेरे पास में एक device है, if suppose if I am having one device, okay, and that device is generating the data parallelly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this data is available. So obviously, for example, this is my D0 bit and this is my D7 bit. So this information. So now, may possible that if we are using the some serial communication type of thing here, मतलब यहाँ पे मुझे serial communication करना है. How I can do the serial communication? Because in the serial communication, what will happen that this data, the D0 to D7 data will be travel on these two lines. So number of lines are here is the two lines. Okay. So now come to the point that here we can say my data is available D0 to D7. So obviously I have to do the something related to the, I will convert that parallel data. I will convert that parallel data to serial data, and then finally I will send. So I will connect this all the lines that is coming from that device. So this device may be any microcontroller or microprocessor, may possible that they are generating some parallel type of things, but you can convert it, and finally with the help of the some connector you can just transmit that data on the serial lines. So far I will say that whatever the data you are getting at your site, if I'm talking about the internet data, वहां पर भी आपके पास में दो ही लाइन अवेलेबल है. हो सकता है कि कुछ लाइंस और भी अवेलेबल जो सिग्नल कंडीशनिंग करती है, पावर सप्लाई का काम करती है. तो हो सकता है आपका जो यूएसबी कनेक्टर है, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द टेलीफोनिक लाइन वेयर अर्लियर डेज the modem is normally used. So in the case of the modem, only the two lines are popular. The first line on which the voltage flows, and another lines at which the some ground level things will be uh, go, because we have to measure the voltage with reference to the ground. So obviously, the two lines used in the case of the modem. Okay. So normally, who will perform this task? So I'm coming to this one is that in the case of the serial communication, whenever we are talking about the serial communication, so there are two important things. So एक चीज अब माइंड में अब ये क्लियर हो गई होगी कि हम पैरेलल कम्युनिकेशन बहुत कम यूज करते हैं, है ना. पैरेलल कम्युनिकेशन हमको बहुत, अगर एक्चुअली इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास से मान लीजिए कि डिस्टेंस एक क्राइटेरिया है, तो इन द केस ऑफ डिस्टेंस व्हाट यू विल प्रीफर, बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट दैट. अगर आपके पास डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट इशू है, डिस्टेंस अगर शॉर्ट है, if the short distance is there, you can prefer the parallel communication. Okay. If the distance is very large, okay. So in the case of this, you cannot prefer the parallel communication because ultimately it will become very so complex. आपको इतनी n number of lines की जरूरत पड़ेगी, and the system will become very costly. And when the maintenance, if the one of the line is not working, you will your information will be completely we can say the misaligned. So in the case of this one, distance plays very important role. So I'm coming to the next point on here is that whenever we are talking about the serial communication, the serial communication can be possible in a two different ways. So the first one way is called as a synchronous communication, and another one is called as a asynchronous communication. In the case of synchronous communication, we know that we are having the two different unit. For example, if I'm having one transmitter here,
और एक मेरे पास दूसरा रिसीवर है, this is my receiver. So in the case of this one, if suppose if I'm transmitting the data and this is receiver is receiving the data, so in the case of this, the clock plays very important role. Okay, so this is the clock. If I'm saying, so this is clock. So transmitter will be having its own clock. I'm writing CLK of TR, and another one is called CLK at the RR. So you can think about that. In the case of the synchronous communication, the whole communication will be go through the clock. And now, how we can say, for example, if I take the earlier example, ये बीट मुझे ट्रांसमिट करनी थी, अपन वही एग्जांपल लेके चले, तो ये बीट मेरे पास 0 1 0 0 0 और 1 है. ओके, so what will happen in the case of this, that in the case this one, this for example this is my D0 bit and this is my D0 D5 bits. So this bit will be travel with reference to the clock. So for example, if I'm saying that I am having the one clock, so if I draw the clock with some different color, so this is my clock, so this is my clock. So this D0 bit will be travel in reference to the clock. So when this age will become, so for example, when this will be start with this like this one, मतलब जब high से low होगा, तब ये आपकी D0 bit जो है वो आपके wires पे travel करेगी. And similarly, मतलब जो भी बीट अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमेशा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग अबाउट दिस बीट, so this bit will also travel with reference to the clock. But the important issue is that you can think about that whatever I had drawn on here is that the both the clock, the transmitter and receiver clock should be synchronous with each other. So the clock matching is very important in the case of this. So if the both the clock are matched, then I will call that type of communication is called as a synchronous communication. ओके, इफ बोथ द क्लॉक, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि यहाँ क्लॉक के रेफरेंस में सेंड हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रांसमीटर है ये किसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे इसको सेंड कर रहा है, रिसीवर किसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे इसको रिसीव कर रहा है. So this is not the task. Okay, so whenever we have to say about that one is that the clock plays very important role in the case of synchronous communication. Okay, so while in the case of asynchronous communication, because we are sending the bits serially to one place to the another place, so the clock plays very important role. So in the case of this one, we can say if the same bit I had to transmit, so the communication first we will draw this bit. So this is my, actually in the case of this, what will happen in the case of asynchronous communication, because there is a no clock. पहला डिफरेंस अपन ये बनाते हैं कि क्लॉक है ही नहीं इसके अंदर, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो क्लॉक के रेफरेंस में नहीं जाएगी. अब बात ये आती है कि अगर आप क्लॉक के रेफरेंस में नहीं भेज रहे हो, तो अगर ये आपका ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है ना, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये बिट मैंने ट्रांसमिट किया 0 1 0 0 1. ओके, so this is my data block. So I will say this is my data block. So this is my 0 0 0 and this is my 1. So this is my D0 bit and this is my we can say D5 bit. Okay, so how the receiver will know that this bit is D0 bit, because may possible that इसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, मान लो कोई दूसरा सेट आ रहा है मान लो, है ना, और उसमें भी पहली बिट D0 जो है वो 1 आ रही है, तो हाउ द रिसीवर विल गेस दैट this is the starting of the frame. So what they have done, that in the case of the asynchronous communication, what will happen, that for example what they have done, they have taken a frame of data. So this is called the data block, or we can say, okay, we will say this will act like a data block, and apart from that they have appended one bit as a start bit. Okay, and after the transmission of that one, they have
clubbed with the another bit is called the stop bit. So this is your stop bit. And there is a one more concept they have introduced about that one. Before starting it, it will inform to this one, the receiver, that I have transmitted the information. So in the case of this, what they have done, they have used the one another type of thing is called as a mark and space. Mark and the space. Okay, so you can think about that. I am doing this some coloring of that one. Is that ये स्टार्ट बिट उन्होंने सेंड किया, तो ये आपकी स्टार्ट बिट हो गई, उसके बाद आपका स्टॉप बिट हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर, क्योंकि स्टार्ट और स्टार्ट बिट ये बताएगी कि यहाँ से आपकी डाटा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और उसको पता चलना चाहिए कि स्टॉप बिट अगर आ गई है तो ये डाटा ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया है। मार्क ये बताएगा कि हम आपको बिट सेंड कर रहे हैं, आप प्रिपेयर रहो, और स्पेस ये बताएगा कि अब आपकी बिट खत्म हो गई है और हम आपको नेक्स्ट मार्क में ये क्लब करेंगे। अपन इसी एग्जांपल को एक बार देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो मेरा डाटा ब्लॉक था वो कैसा था, वो कुछ ऐसा था, 0 1, फिर 000 था अपने पास, और फिर एक 1 था, है ना। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है कंप्लीटली, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रा किया। सो ये मेरी D0 बिट, फिर ये मेरी D1, फिर ये मेरी D2, दिस इज माई D3 and D4 or D5. So this is my complete data block. So if I just use this line, so this is my complete data block. Okay, so I am sending the information from D0 to D5. Okay, now in the case of this, what is the start bit? So always start bit is that it will show that that the transmission begin and this start bit will be always be followed by the D0 bit. The D0 bit is itself is acting like your LSB of this one, and you can think about that. So पहले अपन आते हैं कि स्टार्ट बिट कैसा रहता है। स्टार्ट बिट हमेशा वो लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टार्ट बिट यूज करते हैं तो स्टार्ट बिट वो हमेशा लो बना के रखते हैं, ठीक है। तो आपकी ये स्टार्ट बिट हो गई, तो आई एम सेइंग दिस इज माय स्टार्ट बिट। तो अगर स्टार्ट बिट अगर लो है तो स्टॉप बिट इसका जस्ट इन्वर्ट होती है, मतलब स्टॉप बिट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉप बिट बनाऊं तो ये मेरी जो बीट है, सो दिस बिट विल बी स्टार्ट लाइक दिस, फाइन, and it will be goes like this one. So this will be your stop bit. So you can think about that. Stop is a low bit, start is a low bit, okay, while this one is a high. Okay, so please always be remember that this whenever we are sending this one start bit, भले ही ये D0 बिट लो हो, आपका ये वाला बिट जो है वो हमेशा स्टार्ट हमेशा लो होगा और स्टॉप हमेशा हाई होगा। तो इन दिस केस ऑफ दिस वन, इफ देर इज नो ट्रांसमिशन, फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे बात करें कि अगर ये फिर ये मार्क क्या रहेगा, क्योंकि मार्क को हम वापस से लो तो नहीं बना सकते, तो मार्क को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मार्क को उन्होंने हाई बना दिया। सो दिस इज योर मार्क बिट। तो अगर मार्क को उन्होंने हाई बनाया तो फाइनली ये जो बीट है, सो ये इसका मतलब होता है कि जब भी अगर आपके पास में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो अगर एक सिग्नल, अगर आप, अभी मैं बताता हूँ उसके एक एग्जांपल से, तो ये आपकी मार्क है, मतलब ये आपका हाई है ना। अगर मार्क को अगर हाई बना के रखा है तो ऑब्वियसली आपका जो स्पेस है वो स्पेस कैसा होगा, जस्ट उसका ही रिवर्स होगा, तो वो लो होगा। सो ये आपका स्पेस, सो दिस इज योर स्पेस विच इज लो। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मेरी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, D0 से लेके D5। तो दिस इज माय कंप्लीटली डाटा ब्लॉक। सो दिस इज माय डाटा, है ना। अभी मैंने 5 बिट का बनाया, हो सकता है ये 8 बिट का हो। सो मान लो आप कोई ट्रांसमीटर है आपके पास में और आप असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। Asynchronous communication is very easy to implement. That's why in the most of the devices, we are using this asynchronous type of the communication. So, for example, this is your transmitter, and this is your receiver. So, this is your transmitter and receiver here, and you are transmitting your information asynchronously from this one. So, if this is, for example, if I am considering this is my channel. So this channel may be either wireless or the wired type of the communication. So in the case of this, if you are transmitting your information, suppose if your channel is empty,
if your channel is empty. The condition is that if the channel is empty, है ना. अब इस रिसीवर को पता चलना चाहिए कि ट्रांसमीटर कोई चीज सेंड कर रहा है. तो ट्रांसमीटर कोई चीज सेंड कर रहा है, तो अगर चैनल पे मान लीजिए आपकी फ्रेम स्टार्ट हुई और अगर चैनल पे यहाँ पे हाई आया, जैसे यहाँ पे हाई पल्स आई, एक तरह से माने कि जैसे ये फर्स्ट हाई पल्स आई, है ना, जैसे ही फर्स्ट हाई पल्स आई, इसको मैंने कहा कि मार्क. तो ये रिसीवर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ट्रांसमीटर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया है ना. तो ऑब्वियसली फिर वो समझेगा कि जो नेक्स्ट वाली बीट होगी वो आपकी स्टार्ट बीट होगी और ये आपकी स्टार्ट बीट होगी. एंड आफ्टर दैट योर डाटा ब्लॉक विल बी स्टार्ट. सो आई एम राइटिंग डी एंड देन योर स्टॉप बिट विल बी स्टार्ट. सो हियर एट द हाई योर स्टॉप बिट विल बी देयर. और ये पूरा का पूरा फ्रेम जब एंड हो जाएगा तो ये स्पेस, तो स्पेस इज वेरी वेरी लॉन्गर एज कंपेयर टू द mark and the remaining bit. So this type of the thing is actually is called asynchronous type of the communication. So the important thing is that जैसे मान लो अगर आपको ये करना है, obviously अगर अब मैं इसको कहूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कोई बताएगा कि ये जब मैं इसको कंपेयर करूंगा सिंक्रोनस के साथ में तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल मी. If I compare this synchronous communication with the asynchronous communication, what will happen? Any answer for that? Okay, ये बताओ मेरे को कि दोनों में से कौन फास्ट है कौन स्लो है. Any answer? Synchronous will be fast और उसमें एक extra clock. Obviously, because you are sending the beat continuously with reference to the time. So अगर जितनी ज्यादा आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर फास्ट होगी या जितना ज्यादा आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट रेट से वहां पे ट्रांसफर होती है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट in the case of this one, if I'm talking about this bit, so we are here. Yes. So in the case of this, we are unnecessarily sending because हमको asynchronous type of communication करवाना है. तो हमको ये start bit, mark, stop bit है. ये actually all these bits are called as a redundant bit. Okay. So you are because आपकी information एक जगह से दूसरी जगह properly चली जाए. Properly चली जाने का मतलब होता है कि सामने वाले receiver को ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ये आपका 1 है, remaining bits उसकी ये आ रही है, फिर एक 1 आ रहा है और ये, इसमें से कोई भी बीट अगर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने ये भी किया है कि उसको आपने क्या किया कि इसमें उन्होंने एक पैरिटी बीट भी ऐड किया, वो अपन आगे देखेंगे. सो अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्क क्या रोल प्ले करता है. मार्क हमेशा अगर आपका चैनल अगर एम्प्टी है तो मार्क रिसीवर को जाके ये बताएगा कि आपका ट्रांसमीटर ने कोई ना कोई चीज ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दी है. तो आपके पास स्टॉप बिट के बाद जो भी आपके पास आएगा वो आपका डाटा रहेगा. ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा बिट को आपको एक्सट्रेक्ट करना है. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो आप रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा बिट को आपको एक्सट्रेक्ट करना है और फाइनली उसको आपको रिट्रीव करना है. ओके, और कब रिसीवर को पता चलेगा कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करना स्टॉप कर दिया है? तो स्पेस विल टेल दिस टाइप ऑफ द थिंग. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट ऑन हियर इज दैट I will tell you one more important thing is that आपने शायद पढ़ा भी होगा, आपको जिसने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ाया होगा उन्होंने पढ़ाया होगा. Can you please differentiate between these two terms? What is the baud rate versus bit rate? Can anybody unmute yourself and then tell me that what is the difference between the baud rate and the bit rate? है ना, क्योंकि ये जब असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात होती है, whenever you're talking about asynchronous or the synchronous communication, this baud rate will play very important role. Because we can think about that, for example, आप लोगों ने शायद किया भी होगा, so by default baud rate between the सर बॉड रेट वो होता है जो नंबर ऑफ सिग्नल पर यूनिट सेकंड देखते हैं, और बिट रेट मतलब वो नंबर ऑफ बिट्स. बॉड रेट नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकंड होता है और बिट रेट नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड होता है. Yeah, okay, I will tell you now the basic difference. For example, अगर ये कोई वोल्टेज लेवल है,
कोई वोल्टेज लेवल आप सेंड कर रहे हो, और ये आपका टाइम पीरियड है, सो दिस इज इन द सेकंड। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ टिक यूज किए कुछ सेकंड्स को शो करने के लिए। ओके, so for example, in a this is 1 second, this is second, third session, and fourth second. Okay, so for example, in the case of this, if I'm saying that my signal is changing like this, same signal is represented by this. So if I say this is my 1, 0, and 1, so during the 1 second, how many transition, how many changes in the signal is that? I will say there are total 3 changes in the signal or the symbol. So how many changes that we are observing in a 1 second? So here the 3 changes. So I will say here the baud rate is the 3 baud. Okay, while the bit rate says that that how many bits you are transmitting at a 1 second. So the, both are actually different. कई बार स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि बिट रेट और baud rate में आप डिफरेंस बताओ, तो वो कहता है सर दोनों ही सेम है। ओके, अगर आपने दोनों की ट्यूनिंग ऐसी कर रखी है कि वहां पे भी ये है वो है, तो कई बार वो सेम भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस इफ यू आर इंजीनियर, so then you cannot say that these are the same. So I will show you the something here like this. In the case of the bit rate, for example, okay, so for again I will use the some tick. This is 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ओके, मान लो कि मैं 1 सेकंड में 2 बिट ट्रांसमिट कर रहा हूँ। एक 1 किया मैंने, फिर 0 किया, फिर मैंने 0 किया, फिर मैंने 1 किया। इस तरह से हो सकता है मैंने 2 बार 1 भी ट्रांसमिट किया हो, तो ये मेरी 2 बार 1 है। ठीक है, फिर से मैंने 1 0 ट्रांसमिट किया। सो इन ए पर सेकेंड, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 0, दिस इज 0 1, and this is 1 1, and this is 1 0, and again we can say. So we can say that in the case of this, in per second I am transmitting the 2 bits. Okay, so my bit rate, what is my bit rate? So in the case of this, the bit rate will be, for according to this example, the bit rate is 2 bits per second. Oh, sorry, per second. Okay, so we can say 2 bps is the correct one. Okay, so it is say 2 bits per second. So nowadays, if anybody can unmute yourself and then tell me what is the basic difference nowadays in the USB 2.0 and USB 3.0. आपके पास दो अलग अलग यूएसबी है ना, आपने कभी देखा होगा ना, यूएसबी 2.0 भी होता है, यूएसबी 3.0 भी होता है। तो इतना तो आप, क्योंकि उसको आप बहुत यूज करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें बिट्स पर सेकंड का डिफरेंस है। कोई किलो बिट्स पर सेकंड में, या हो सकता है कि 1 और 2 एमबीबीएस पे डाटा ट्रांसफर करता हो, और कोई 16 एमबीबीएस पे डाटा ट्रांसफर करता है। तो 3.0 जो है उसकी जो डाटा सेंडिंग और रिसीविंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है as compared to USB 2.0. So this is the basic difference. So how many signal transition per second is called as a baud, while how many bits you are sending per second is called as a bit rate. Okay, now I will tell you one important thing is that your 8051 microcontroller, okay, so 8051 microcontroller also supports the serial communication. अब अपन आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। अब सीरियल कम्युनिकेशन यूज करता है, तो कोई कहेगा कि सर आपने बताया सीरियल कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। सो आई विल से दैट इन द केस ऑफ दिस वन इज दैट asynchronous communication is preferred in 8051. So whenever we are talking about the asynchronous communication, normally, for example, if suppose if I'm having one mu p, okay, I'm having one mu p. So when this mu p want to transmit some data serially, and serial means in a asynchronous manner, we have to use the some interface external to this mu p. And this interface, I am saying this is one of the interface, because I have to make the data compatible to the lines. Okay, so for example, at this lines it want to send. So this is your lines.
इस लाइंस पे उसको सेंड करना है. So for example, the name of that one is called as a UART. So this is called this UART. So for example, it is sending the data, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. So in the case of this one, this is called the UART. So this UART will send the data. So first thing is that this is the parallel type of data, and this is the serial type of data. Apart from this parallel to serial conversion, it will perform so many things that it can generate the baud, and then each of the signal it will take from the microprocessor in a continuous baud manner, and then finally it will make it compatible to the sending line. So I'm sending, this is the serial type of data that you will receive here, and it will the UART is receiving the data from the microprocessor as a parallel data. Okay, so important thing is that we have to connect them some external interface. Okay, and the name of this device is called as a universal asynchronous receiver and transmitter. Okay, universal, why it is called as a universal? Because it is compatible with the so many type of the microprocessor and the microcontroller. That's why it is called as a universal. And another type of thing is that if I am writing UART, means only it will support the asynchronous type of the communication, not the synchronous one. And it is receiver, means it can receive the data. If the some data is coming from this line, okay, so if the some data is coming, so for example in the case of this one, कोई डाटा अगर आ रहा है तो मतलब ये डाटा इस लाइन से रिसीव करेगा, तो in this case it will act like a receiver. So this receiver, and in the case of this, if it is transmitting the some data, it is transmitting the some data. So in the case of this one, it is called as a transmitter. So it will act like a receiver and transmitter at the same time. Okay, so this is called the universal asynchronous receiver and transmitter. So अब आप कहेंगे सर इसको यूज करने का क्या पर्पस है? बिकॉज दिस डिवाइस कैन जनरेट द डाटा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ये D0 to D7 है ना, तो ये टाइप ऑफ डाटा क्या है? पैरेलल डाटा है. मुझे इसको सीरियल बनाना है. ओके, तो एक ड्यूटी तो इसकी हो गई कि पैरेलल टू सीरियल बनाएगा. उसके बाद में आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पर अगर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहा है तो यूजर तो बिल्कुल इससे बॉदरेशन नहीं करेगा कि मेरे को मार्क बिट भी ऐड करना है, स्टार्ट बिट भी करना है, स्टॉप बिट भी करना है, स्पेस भी करना है. सो इन द केस ऑफ दिस वन, the duty that of adding this mark bit, start bit, stop bit, and the space bit is performed by the UART. So ultimately, I will say that अगर ये मेरा transmitter है, for example, this is my transmitter. So at the receiver, if I draw the diagram at the receiver with some different color, receiver is also using some UART because this receiver microcontroller will understand the language of parallel communication. So this is my receiver. Okay, so this is my D0 to D7 bit. Okay, the thing is that if these two lines are connected with each other, if these two lines are so at so many distance and they are connected with each other, first thing is that this UART which is connected at the receiver will perform the reverse job because the data is coming in the serial manner, and it will try to do the conversion, and it will do the parallel conversion. So it will be now compatible to the receiver because ट्रांसमीटर ने जो सेंड किया है उसको रिसीवर को भी वो सेम लैंग्वेज में चाहिए. तो पहली ड्यूटी ये हो गई. दूसरी बिट ये हो गई कि यहाँ पर जो मार्क, स्पेस, स्टार्ट और स्टॉप बिट हो गए, ऑब्वियसली ये यहाँ तक ही सुटेबल है, यूआरट इस यूआरटी तक ही सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को D0 to D7 मेरे को सिर्फ डाटा से मतलब है. सो इन द केस ऑफ दिस, उनको सबको रिमूव करने का जो फंक्शन है वो भी ये यूआरटी करेगा. सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज अ यूजार्ट. द अनदर नेम इज, आप कहेंगे कि सर अगर मेरे को सिंक्रोनस करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? सो यस, this is called as a UART. Another device that is available is called USART. USART. So the we can say this
is available in the format of integrated circuits. So some ICs are available for UART and USART. So another is called as a universal. This is perform the synchronous as well as the asynchronous receiver and transmitter. Okay, so you can think about that. This is different. So I hope that you got the difference between these two. What is the basic difference between these two? UART versus USART. Okay, it will support only the asynchronous type of the thing, while it will support synchronous as well as the asynchronous type of thing. So this is called the USART. Okay, so my point was there is that this was the case of the microprocessor, but when we talk about the microcontroller, so in the case of the microcontroller, what will happen? 8051 microcontroller, there is an inbuilt UART is available. Okay, so I'm saying UART. So this is on chip. The basic primary thing is called as a on chip. Okay, so obviously there is a one pin will be available to this one is called as a TXD. The TXD stands for the transmit the data, and the RXD. So can anybody tell me that ये TXD RXD, क्योंकि अगर आप जो भी बीट है तो ऑब्वियसली ये बीट कैसी लग रही है आपको? ये अगर मैं एक बिट से ट्रांसमिट कर रहा हूँ, एक बिट से मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उस टाइम रिसीव नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता हूँ. ऑब्वियसली सम ग्राउंड लेवल थिंग. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन द केस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर we have to use this chip UART external to the microprocessor, and apart from that, in the case of this microcontroller, we had the inbuilt on-chip UART is available. So the same thing is that obviously at this pin we are having this transmit section and the receiver section. So this plays very important role, this transmit and receive section. So here I am stopping. Please attend tomorrow's class because I am going to give you some notations and some practical demonstration about the how the serial communication is feasible. So please tell me your comfortable time on which we can start the class, but don't miss because we are having I have the minimum amount of the time with me क्योंकि syllabus अभी काफी ज़्यादा बचा हुआ है, and then in the case of this हमें